Welcome back to our lecture series of complex analysis. In this lecture, we will study the complex exponential function. This is a very important elementary function in the whole complex analysis. Now, let me tell you first the definition and then we will see why we are calling this function as an exponential function. And then we will see कि ये real के exponential function से कैसे अलग है. Okay. So, first of all, we will study the definition first. So the function e to the power z defined by e to the power z is equal to e to the power x cos y plus iota e to the power x sin y is called the complex exponential function. Now the second question is कि हम इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल क्यों रहे हैं. ओके, सो व्हाई इज इट कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो आई विल टेल यू सम रीजंस दैट विल शो कि हम इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोल रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, जब भी हम इस z को रियल पर रेस्ट्रिक्ट करते हैं, दैट इज, तो फर्स्ट रीजन क्या है, दैट इज if we restrict z, that is equals to x plus iota y, to be a real number, that is y equals to 0, then you can see then e to the power z, that is equals to e to the power x plus iota times 0, and we know that will be equals to e to the power x cos 0 plus iota e to the power x sin 0. Now sin 0 will be 0 and cos 0 will be 1. So this is equals to e to the power x. So you can see जब हम पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को केवल रियल नंबर पर रेस्ट्रिक्ट कर दें तो ये एक जो भी फंक्शन है, लेट मी नॉट कॉल दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो भी फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है. सो दिस इज दी वन रीजन कि ये जब हम रियल की बात करेंगे, केवल रियल नंबर्स की बात करेंगे, तो ये जो भी फंक्शन है e टू द पावर z, ये रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जैसा बिहेव कर रहा है. ओके, दैट इज द रियल exponential function, right? Now come to the second thing, and हमें पता है कि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये हमेशा इसके इक्वल ही आता है. दैट मीन्स द डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज सेम इज द e टू द पावर x. सो इस वाले कंसेप्ट को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए देखने के लिए लेट मी राइट अ थ्योरम, एंड इट सेज, ये थ्योरम हमारे इस क्वेश्चन का ही पार्ट है. ठीक है, आप इसको एज ए थ्योरम भी कंसिडर कर सकते हैं, और जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि इससे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल क्यों रहे हैं, उसका भी एक पार्ट है. ठीक है. सो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to the power z is entire, एंड द मोमेंट इट एंटायर, तो हम इसके डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं. इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय d over dz. E to the power z is same as e to the power z, and we can write the proof of this theorem also. So you can see
let f of z is equal to e to the power z. Okay, and that can be written as e to the power x cos y plus iota e to the power x sine y, and that will implies that our u function ux comma y is equal to e to the power x cos y. This is the real part of this function, and the imaginary part vx comma y is equal to e to the power x sine y, and that will implies that what about the ux, that is the differentiation of u with respect to x while taking y as a constant. So we have e to the power x cos y, and you can see this is the same as v y. ओके, इस साइन वाई का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये cos y आएगा, तो e टू द पावर x cos y. ठीक है, एंड again you have that u of y that is equals to e to the power x minus sin y. ठीक है, so that is e to the power x sin y, that is same is this is this one, so that is equals to minus of v x. Okay, so you can see Cauchy-Riemann equations are satisfied without specifying the points, right? So you can see, so u x comma y and v x comma y are continuous. Their first order partial derivatives are exist and continuous. The moment we are writing continuous, that means they are continuous everywhere. अगर हमें पॉइंट स्पेसिफाई करने होते हैं तब हम यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं दैट कंटिन्यूस एट सम पॉइंट और वॉट एवर, बट अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट मेंशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये कॉन्टिन्यूस है. ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है. ठीक है, and you can say also Cauchy-Riemann equations are satisfied everywhere. And you can say hence e to the power z is differentiable everywhere, thus entire. Okay, and the derivative is given by, अगर ऐसा कुछ है तब हम डेरिवेटिव कैसे देते हैं, गिवन बाय f prime z that is equals to ux plus iota vx, and you know what is ux, that is e to the power x cos y plus iota what is vx, that is e to the power x sin y, and you can write this as e to the power x cos y plus iota sin y, and that is nothing but e to the power x e to the power iota y, and that is equals to e to the power x plus iota y, and that is equals to e to the power z. So you can see, so we have that d over dz e to the power z equals to e to the power z. So what we can conclude that this is our theorem. जो हमने थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा था वो यहाँ पर प्रूफ हो गया है, बट जिस हेडिंग के अंदर हमने इस थ्योरम को पढ़ा है कि हम इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दैट. ओके, सो यू कैन सी thus
thus the only entire function, can I say this is like real exponential function. मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी तो हम ऐसे ही करते हैं, दैट इज डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स. ठीक है. सो ये दोनों ऑब्जर्वेशन से ही हम ये लास्ट का कंक्लूजन लिख रहे हैं. दैट इज द ओनली एंटायर फंक्शन एफ दैट एग्री that agrees with the real exponential function e to the power x for real input and that satisfy the differential equation which is f prime z is equals to fz, okay, is the complex exponential function e to the power z, and that is defined by e to the power x cos y plus iota e to the power x sin y. Okay, and that's why we are calling this e to the power z as exponential function. Hence, we call it the exponential function. Okay.